Let's talk about lenses now. This is also a very interesting topic. Today we'll only do intro. Like we'll understand what a lens is and things like that. अच्छा, lens होता क्या है पहली बात? A lens is just a piece of equipment that forms an image by refracting light. Okay? Lens क्या होता है? ये एक इक्विपमेंट है जो कि लाइट को रिफ्रैक्ट करके एक इमेज बनाता है. For example, you have lenses, natural lenses in your eyes. और आपकी आंखों में जो rays जाती हैं, they're refracted and there's like a whole biology thing going on in your eyes. Okay? It forms an image. And that's how you see whatever you're able to see. मैम Yes? इसके अंदर वो अकोमोडेशन वाला भी है कि वो चेंज शेप करता है That's क्या? yes. So the inverting shape point पे जो shape form होती है, sorry, जो image form होती है, वो invert हो जाती है. That's the brain's function. We're not doing biology here. We're only going to look at what a lens is and the types of lenses and the ray diagrams for it. Okay? Yes, sir. It's a piece of equipment that forms an image first point क्या है? It forms an image. वो कैसे करता है? By refracting light. Lenses में reflection होती है हमेशा. Right there. हमारे पास two types of lenses होते हैं. एक होता है converging lens and the second thing is diverging lens. So let me, okay, that's fine. Converging lenses and diverging lenses. Converging lenses को हम convex lenses भी कहते हैं और diverging को concave. ये कैसे याद कर सकते हैं आप? इस तरह. ये जो पहले 4 alphabets है इसके same है. Converging, convex और फिर दूसरा diverging concave होगा. इनको हम represent कैसे करते हैं? जो हम ray diagrams बनाएंगे उनमें हम इनको ऐसे represent करेंगे. We can either draw an oval here. Oopsie. Wait. So an oval. यहाँ पे हम एक arrow बनाते हैं इस तरह को. Okay? Diverging lenses को हम कैसे represent करते हैं? इस तरह. ये एक hourglass shape होती है. Like that. That. और दूसरा तरीका है इस तरह इसको एक एरो ही बनाएंगे लेकिन उसके जो एरो हेड्स है वो इन्वर्टेड होता है. Like that. So you should be like familiar with these shapes. Any questions so far? मैम सिर्फ ये वाला कि डाइवर्जिंग लेंस का जो एरो है वो आपने उल्टा क्यों लगाया? That's just a symbol that we use. बस सही है. जी. मैम Yes. मैम आपसे सिर्फ एक बार वाली चीज पूछनी थी. ये जो कन्वेक्स लेंस है ये आपको पता है ना कि लेंस चेंज शेप करता है जब लाइट उसमें रिफ्लेक्ट करनी होती है, जब फोकस करनी होती है.
ये मैम आपको इस बात का पता है ना कि लेंस चेंज शेप करता है जब उसने लाइट वो अकोमोडेट करनी होती है? I was not aware of that. अच्छा, चलें Yeah. फिर मैम, ठीक है। Okay, thank you for letting me know. I'm sure that's something related to biology or something, and that's probably why we're not going to cover that. But it does make sense that lenses, they're not hard solids. They're semi-liquid, so they can change मैम their shape a little bit. Yes? मैं ये पूछ रहा था कि बस अगर हम लोग इसे थोड़ा सा और फैटर कर दें तो फिर भी कन्वेक्स रहेगा ना? Yes, that's right. Even if you had like a thicker cell, that would still be, not cell, sorry, lens, that would still be convex. Clear? यस मैम। All right. Now let's um, do a little bit of introduction for lens diagrams. Lens diagram. Okay. कुछ features हैं जो आपको बताने चाहिए. And they're very simple. I'll just write them down first, और फिर जब मैं draw करूंगी तो they will make much more sense. बल्कि I think I should draw it side by side. पहला feature है principal axis. Principal axis क्या होता है? It's a line which passes through the center of a lens. Okay. For example, let me draw it here. अगर आपका ये lens है, we're taking converging lens for now. तो इस लेंस के जो सेंटर से लाइन पास करेगी इस तरह, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं. So I'm just going to label it 1 here, and 1 is the principal axis. अच्छा, दूसरा क्या है? Feature. दूसरा है principal focus. जिसको हम focal point भी कहते हैं. Focal point. Okay. Focal point वो point होता है जहां पर आपकी image form हो रही होती है. Okay? So basically होगा क्या कि अगर आपके पास एक रे है, let's say ये रे आ रही है ग्रीन कलर की, यहाँ पर आई, क्योंकि एक कन्वर्जन लेंस है तो क्या होगा, ये रे रिफ्रैक्ट होके कन्वर्ज होगी. कन्वर्ज करने का क्या मतलब होता है? उसको बेंड होके किसी पॉइंट की तरफ आना, कन्वर्ज. और डाइवर्ज क्या होता है? दूर दूर जाना है. ओके, सो ये लेंस से रिफ्रैक्ट होकर कन्वर्ज होगी और इस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को हिट करेगी. ओके, सो दिस इज योर प्रिंसिपल फोकस. यहाँ पर इमेज बनती है और इसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस. I'll just write, I guess, 2 here, principal focus. और रे के लिए एरोस बनाना बहुत जरूरी है, like that. अच्छा, मैम yes. हम ये प्रिंसिपल एक्सिस वाली अलग लाइन पास करेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस सिर्फ एक प्लेन है यहाँ पे इसके सेंटर में, लेंस के सेंटर से जो इमेजिनरी? प्लेन है. यस, इट्स एन इमेजिनरी प्लेन. मैम जो ये थोड़ी सी रेस इधर उधर जाएंगी उनका कोई कंसर्न नहीं होगा? किधर जाएंगे? ये जहाँ पे ये लोकेशन मेरे ख्याल 2 लिखी है, इसके आगे भी एक लाइन जा रही है ग्रीन. ये हाँ जी, तो ये इमेजरी फॉर्म करेगी. सो इमेज इज फॉर्म्ड वेयर देयर इज एन इंटरसेक्शन. यहाँ पे कोई इंटरसेक्शन नहीं हो रही, so it's just a ray that's passing. जहाँ पे intersection बस हो रही ये है, एक that's रफ where है. it's not rough. It's like continuation of that ray. ओके. Okay.
Alright, so principal focus क्या होता है या focal point क्या होता है? It's the point at which rays of light traveling parallel to the principal axis. यहाँ तक क्या है वो रेस जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल ट्रैवल कर रही होती हैं intersect the principal axis and converge at and converge. Okay. या दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है अगर हम diverging lenses की बात कर रहे हो which this is the point I'll come back to when we cover diverging lenses. Okay, for now I'm just going to write it down. यहाँ पे वो point at which diverging rays appear to proceed. I know it might not make sense right now, so that's why I don't want you to worry about it. I've just written it down. I will come back to this point when we're doing diverging lenses, okay? For now, forget about it. अभी आपको ये बताना चाहिए कि wait, sorry, let me finish my sentence. Okay, principal axis क्या होता है? Sorry, principal focus क्या होता है? कि जो rays principal axis से parallel आ रही हों, जब वो इस lens से refract होके converge हो, okay, और principal axis को जहाँ पे hit कर रही है, intersection हो रही है, that is your principal focus, यहाँ पर focal point. Yes, you were saying something? मैम कन्वर्ज और रिफ्रैक्ट में क्या फर्क है? Refraction, bending of light. It can either bend towards the axis, principal axis, yet can bend away from the principal axis. Refraction is just bending. Towards जो होती है जो एक पॉइंट की तरफ आती है कन्वर्ज कहते हैं उसको और डाइवर्ज का मतलब है दूर दूर जाना रेस का एक दूसरे से कन्वर्ज का मतलब है एक पॉइंट की तरफ करीब आना लाइक टू अ सिंगल पॉइंट कन्वर्जेस रिफ्रैक्ट टू अ सिंगल कॉमन पॉइंट और diverge क्या होता है the rays are moving away in different directions. Is that clear? Okay. Next है हमारे पास term focal length. It's very simple. Focal length क्या होती है आपके lens के center से okay if this is the center of the lens I've drawn a yellow line to represent the center of the sun so sorry lens why do I keep saying so आपके lens के center से focal point तक के distance को focal length कहते हैं 3 so the distance between the center of the lens and the principal focus distance between the center of the lens and the principal focus. Okay? Center of length से principal focus तक की length को या distance को हम focal length कहते हैं. Is there any question? No, ma'am. Okay. We're gonna cover one more Ma'am? thing. Yes? तो आपने ये लेंस के अंदर लाइन क्यों ड्रॉ की है? ये मैंने सिर्फ उस लेंस का सेंटर रिप्रेजेंट करने के लिए ड्रॉ किया एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ड्रॉ इट एज वेल क्योंकि रिफ्रैक्शन हम यहाँ जो बेंडिंग ऑफ लाइट है
either it's diverging or converging या diverging, वो हमें सेंटर से करवाते हैं. Okay, so it's just like a good practice to do. ये मैंने सेंटर को रिप्रेजेंट किया. Is that clear? Yes, ma'am. अब हम कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंसेज को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने लगे. Okay. So let me copy this or maybe the entire thing here. Lenses. You have converging and diverging lenses. Let's cover converging lenses first. Converging lens में क्या होता है? ये जो पैरेलल रेज हैं, ये रे, यहाँ पे एक और रे ड्रॉ कर लेते हैं, दो पैरेलल रेज. ये कन्वर्ज होती है टू अ सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है. ओके, इसको हम converging lens कहते हैं. Let me write down the points. Firstly, let me draw a diagram here. I'll just duplicate this one. Next. Maybe shorten it a little. ये लेबलिंग की अब जरूरत नहीं है. ओके, लेट्स से आपके पास ये पैरेलल रेस है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये रेस रिफ्रैक्ट होकर एक पॉइंट पर कन्वर्ज करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी. दैट इज योर converging lens. So let me write down the points here. In a converging lens, parallel rays are brought to a focus. Are brought to a focus, और इस focus को हम क्या कहते हैं? Principal focus या focal point. Okay, the rays converge. इसका like it's the same point, लेकिन मैंने इसको थोड़ी different wording में लिखा है. The rays converge or intersect at a common point. अच्छा, now the focal length जो कि इस इंटरसेक्शन पॉइंट का लेंस के सेंटर से डिस्टेंस है, ये कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है. ओके, लेट मी ड्रॉ अनदर सेट ऑफ रेस. अगर ये रेस है, लेट्स से, no sorry, not, it doesn't depend on मैम rays. Yes, मैम ये पैरेलल इस सेंस में है कि दोनों की डायरेक्शन yes, पैरेलल रेस होती हैं जो एक ही प्लेन में होती हैं, जो इंटरसेक्ट नहीं करती. लाइक अगर मैं ये दोनों रेस लेती हूँ, तो these two are parallel. लेकिन मैम उसके बाद पैरेलल उसके बाद नहीं, उसके बाद पैरेलल नहीं रहेंगी. यहाँ भी पैरेलल रेस आके लेंस से पास होकर इंटरसेक्ट करेंगी. यहाँ तक सिर्फ वो पैरेलल है. ओके, यस मैम. let me take another situation here. So एक ये situation हो गई और एक ये situation हो गई. Let's say अब हम थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे. So अगर ये लेंस थोड़ा ज्यादा कर्व्ड होता, ओके, तो फिर क्या होता? What's going on here? अच्छा, अगर आपका लेंस ज्यादा कर्व्ड है तो क्या होगा?
ज्यादा बेंडिंग होगी, ठीक है, बेंड वो ज्यादा करेगा और रेस पहले ही, मतलब जल्दी रिफ्रैक्ट होकर इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, लाइक दैट. सो मैम wait, please let me finish first. You can make 1 minute. अच्छा, अब ये जो डिस्टेंस है, ये इस डिस्टेंस से कम है. So the focal length is less here and it's more here. The point is that the more curved the lens, the shorter the focal length. More curved a lens, and the lens, the shorter the focal length. बस ये आपने याद रखना कि लेंस जितना ज्यादा कर्व्ड होगा, फोकल लेंथ उतनी कम होगी. Okay, now go ahead. You're asking something? मैम आप I'm sorry, I can't hear you. Could you please repeat it? अब आवाज आ रही है मैम? Yes, I can hear you now. मैम ये कन्वर्ज वाला जो आपने सेकंड पॉइंट बताया, स्टार जहाँ पे लिखा आपने. This one? जी. मैंने इसी पॉइंट को रीवर्ड किया कि रेस जो है वो एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है या कन्वर्ज करती है. ये जो पैरेलल रेज है ये रिफ्रैक्ट होकर इस कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी या कन्वर्ज हो जाती है उस पॉइंट पे. Is that clear now? यस. Okay, let's quickly do a diverging lens now. So you guys have an idea of how these lens diagrams will work. So let's quickly do that. Okay, I think I'll drag it here. अच्छा, अब diverging lenses की बात करते हैं. We'll draw a diagram for diverging lenses, and I'm sure this will clarify a lot of your confusions. Now, instead of that oval lens, you'll have, let's see, our diverging lens in the center, like that. अब diverging lens क्या करता है? वो आपकी रेस को डाइवर्ज करता है. डाइवर्ज करने का क्या मतलब होता है? उनको मतलब दूर दूर इस तरह डाइवर्ज करेगा. So the rays go like that. मैम स्प्रेड हो जाती है. That's right, they spread. Correct word. Alright, so ये diverge हो गई like that. अच्छा, image तो हमेशा lenses में form होती है. Now you guys might be thinking there is no intersection point, so where is the image? So there's this one very good point that I want you to remember. Okay, wait, take a dotted line here. कि ये जो lens है आपने क्या करना है? Oh, here. आपने इसको dotted line को पीछे extend करना है. Okay, here. और इसको भी dotted को पीछे extend करना है. ये जो dotted lines जहां पे intersect हो रही हैं, that will be your intersection point, and that's your image here. Now, let me state a few more points, and then you can ask your questions. That in a diverging lens, these parallel rays of light are spreading out, or they're diverging from a point. और ये point कहाँ पे होता है?
that point is behind your lens. Okay, you can extend your diverging rays backward, dotted lines extend करके अपना वो point find out कर सकता है. Is that clear? मैम यानी कि पॉइंट Sorry, पे आ रही है can you repeat your question? ये जो पैरेलल रेस है ये रिफ्रैक्ट होके इस पॉइंट पे आ रही है या वो सीधा जा No, no, रही no, है no. They are going like that. अभी आपको ये थोड़ा समझ में नहीं आएगा मतलब there are still some more points here, but I will जब हम करेंगे ना the concept of real and virtual images फिर आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ आएगा. अभी जो मैं आपको points बताए अभी वो याद कर लें. Inshallah, when we cover real and virtual images, I will come back to these diagrams, inshallah, or maybe you guys can remind me to come back to these diagrams, and then they will make much more sense. For now, what you have to remember is that ये जो parallel rays हैं ये diverge होंगी और इसका जो कॉमन पॉइंट है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इन पैरेलल रेस को एक्सटेंड करना है behind the lens और ये जो intersection point है इसको मार्क कर लेना है. This intersection point is your focal point, or sorry, principal focus or focal point, same thing. This is your principal focus. I'm just going to write PF, principal focus. And this, from your principal focus to the center of lens, is your focal length. Oh, and I'll just draw a line in the center of this lens as well to show the center. Okay? Acha. Let me see if there's anything else. Okay, yeah. So there was this one point that I wrote here. I'll just go back to that. This. Okay, principal focus kya hota hai? At which a point at which diverging rays appear to proceed. Okay, appear. Let me copy this here. So this principal focus, ये वो पॉइंट है जहां पे डाइवर्जिंग रेज अपीयर टू प्रोसीड. अपीयर का मतलब है आपने खुद एक्सटेंड की है. They appear to proceed and intersect here. So this is your principal focus. This point, principal focus, and this point here. Any question? मैम हम लोग इसे फोकल पॉइंट क्यों नहीं कह सकते It is called a focal point. A focal point कह लें, principal focus कह लें. There are two names for the same thing. यस मैम Any other question? नो मैम Okay, let's do a recap, a quick recap. हमारे पास दो types के lenses हैं, converging or diverging. In a lens diagram, we have three important features. एक हम line draw करते हैं, इसको principal axis कहते हैं, फिर अपना lens draw करते हैं. Lens इस principal axis से parallel line draw करते हैं. और depending on the type of lens, अगर आपके पास diverging lens है तो वो rays diverge होंगी. Converging lens है तो वो rays converge होंगी. Diverging lens है तो rays diverge होंगी. और इस point पे जहाँ पे rays या तो solid lines intersect कर रही हैं या dotted lines intersect कर रही हैं, that's your principal focus.